Today we are going to start a new chapter, that is linear equation. So in class 8 we have linear equation in one variable. Before starting with the one variable, let's introduce the equation. What is equation? It is a mathematical statement which equate two algebraic expression with a variable or number. So here we have variable and number both in our syllabus. And the next one is linear word. What does it mean? Linear. When you see in expression the variable power, that means exponent of the variable, if it is 1, then that type of equation we call linear equation. Now if you see one variable in the whole equation, then it is linear equation in one variable. If you see two variable, take example 3x plus y equals to 6. Here you can see that x and y, two variable. Then we call it is linear equation in two variable. Now we'll discuss this in details. Here in back side we have the official definition, not official, just you can say that book is definition. You can look at here. Here first one, statement of equality between two expressions consisting of variable or and numbers. That means with the variable you may have number, okay, or one variable and the number. Now second is linear equation definition. An equation in which the variable or the variables have an exponent 1. Let's try to explore this definition. Here, if I take 3x plus 5 equals to 2x square. So is it a equation? Yes, it is a equation. Is it a linear equation? No, it is not a linear equation. Where and why? So here we can see that there is a power 2. So here definition for linear, exponent should be 1, not more than 1. It is quadratic equation. Okay. If there will be power 3 like that, then it is a cubic equation. If there is a power 4, then it is a biquadratic equation. After that we don't have a special name. Okay. Or we have but we don't have in our syllabus. So now here we don't have this type of equation in our syllabus. We have only this type of equation, which is linear equation in one variable. In the higher classes we will see that if I write here one more variable, that is y, then you can say that it is linear equation in two variable. Y, see the power is 1 and 1. So all of them have a power 1. Now if you say that, say if I take here power 2, but here we have like that, so can I say it is a linear equation? No, you cannot say. To become a linear equation, you need to see the each variable power. If it is 1, then only it is linear equation. Otherwise, it is not. So, we will not see in our syllabus this type of only one variable. Instead of writing x, you may ask, sir, can I use any other variable, means other symbol? Yes, of course you can use. You can use your alphabetical name also. Like right here 3m plus 5 equals to 2x.
So is it linear equation? Yes, it is linear equation. Is it linear equation in two variable? No, it is not a linear equation in two variable. Why? Because here is m and there is x. And if I write here m, now 3m plus 5 equals to 2m. Yes, it is linear equation in one variable. Condition you need to see that variable exponent should be 1. Okay, and if there is one variable, then it is linear equation in one variable. If there is two variable, then it is linear equation in two variable. So here we have the standard form for linear equation in one variable and for linear equation in two variable. If you look at here, I have written here ax plus b equals to 0, where a and b belongs to this is the symbol of belongs to real number. So we'll see in the high classes real, meaning in class 9 which bigger number, so that is a real number. So combination of irrational number and rational number. I hope that you people have heard about it in square and square root there, the root 2, these are irrational number, and rational number already there in your syllabus. So combine these two numbers, give you real number. That means here a and b can be any number which is belongs to real. But one more condition they are given, that a cannot be 0. Why? Because if we take a equals to 0, then 0 into x will give you 0. And b cannot be 0. Why? Because if we take b is not 0, if you write here 5, you are saying that 5 equals to 0. How could it possible? It's not possible. Okay, that will become infinite. So that's why your a cannot be 0. So b can be 0? Yes, of course b can be 0, no problem in that case. That's why here you can see that I have not written b not equals to 0. B can be 0. Now, second one, that is ax plus by plus c equals to 0. Okay, you may ask me, so why you are writing here 0? Because you have an example of this one where you don't have a 0. See, we'll take 2m, this side, we'll see how to transpose the number this side. And rule we're going to see, transposition rule. Okay, we're going to see each and every rule. So, here, whatever things would be there, if we take whole thing this side, so that side become a 0. Okay, that's why we keep this side in standard form 0. So ax plus by plus c equals to 0, where a and b, look at x and there is a a, this is coefficient of x, a is the coefficient of x, b is the coefficient of y, and c is the constant term. So constant term may be 0. For example, 2x 5y equals to 0. 2x plus 5y equals to 0. This is the linear equation in two variables, where constant term, that is c, equals to 0. So this is the example. Now we have rules for solving linear equation. Here, if you see, I have combined 4 rules in 2. Here we can add any number, means same number. We can add same number on both the side of the equation. That is the first rule. We can subtract same number from both the side of the equation. Let's try to understand this first statement. Here, if I take one linear equation, so 3x plus 5 equals to 7. So 3x plus 5 equals to 7. So how are you going to solve it? Here, you can see that there is a 5 extra part. Solve. So what is the solve means? Solving means? Solving means find the value of x for which this is your left hand side, this is your right hand side. So for which left hand side must be equals to right hand side. So
Here we have 5 extra. We need to find x. So what rule we are going to apply? We'll subtract same number from both sides. So how are you going to subtract? 3x plus 5 minus 5, 7 minus 5. Now if you look at plus 5 minus 5 give you 0. That means here 3x equals to 7 minus 2. That means 2. We have applied here this one. Subtract same number on both sides of the equation. Now to find the value of x, look at here in the coefficient 3. We don't need this 3. So it is in multiply from. If you divide on both sides, so which rule we are applying? Divide. If we divide on both sides by same number, so which number we are going to choose? Yes, 3. We will choose here 3. Why? Because if you see here, if you divide this by 3, you will get 1. That means x. 1 into x means x, and this side will get the result. So now, if we divide on both sides by 3, yes, we can do. This is the rule. Same thing we can do. Same thing you can add on both sides. Same thing you subtract from the both sides of the equation, remember. And same thing you multiply, and same thing you divide. And the same thing for multiply and divide should be non-zero. Look at second statement. Non-zero number, you cannot divide the number by 0. In YouTube video you can see that many people are using or violating the rule. What rule? They are dividing by 0 or multiplying by 0, and they are getting different number and different proof they are doing that 2 equals to 0. How could it possible? It is not possible. So they are not using the mathematical concept. Okay, forget that one. Now let's come here. So 3 divided 3 give you 1, and 1 into x give you x. Here x equals to y. This is the solution for x. Now we are going to see that if we take the value x equals to 2 by 3, what you can see, we'll check it here. What check? That this is the solution for this whole equation. To check this one, we'll take separately LHS. So here LHS is 3x plus 5. Now you substitute the value. What? 2 by 3. X equals to, right now we have got. So 3 into 2 by 3 plus 5. 3 cancel, you get 2 plus 5, and it will give you 7. And look at here. 7. Have you seen? That is equals to RHS. So here we got that for x 2 by 3, LHS and RHS are equal. That's why here the solution for x is 2 by 3. So what rule we have applied here? We have applied subtraction and division. Okay. Now if I change little bit here, what change? If I do here minus, and if I change it here by 3 like that. Okay. Now you can see that what rule we are going to apply. Okay. So let's see. Here we have minus. If we write plus 5, then minus 5 plus 5 give you 0. Forget about this side. We will not care about this. With our target to make x alone, no one should be here with the x. Okay. So first target plus or minus part will take out. To take out, you can see that there is a minus 5. So if you add plus 5 both sides, you can see that this side will get 0. So here plus 5, minus plus 5, and this side also plus 5. See, same thing you have to add.
अगर आप ले लीजिएगा, आपका दोस्त का वज़न 30 kg और आपका वज़न भी 30 kg है, अगर हम दोनों तरफ 5 kg का चावल रख दें तो देखिएगा दोनों तरफ का वज़न सेम रहेगा। तो यही कहना है, या दोनों तरफ से हम 5 kg हो या और कोई भी सेम नंबर निकाल लेते हैं तो देखिएगा दोनों का वेट सेम रहेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों का वेट, हाँ पहले याद रखिएगा दोनों का वेट सेम होना चाहिए। इक्वेशन का मतलब इस तरफ और इस तरफ का वैल्यू सेम होना चाहिए। जब x का वैल्यू कुछ भी बिठाइएगा, कुछ भी नहीं मतलब जो आने चाहिए वो बिठाने से आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो उसको इक्वेशन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक को 25 kg ले रहे हैं और एक तरफ 30 kg ले रहे हैं और फिर दोनों से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, बोल रहे दोनों इक्वल क्यों नहीं हुआ सर? आप तो पहले इक्वल लिए नहीं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इक्वेशन में इक्वल लेना है, ठीक है। तो पहले इक्वेशन का मतलब इक्वल ही है यहाँ पे। तो अब हमें देखना है कि x का, ठीक है हम लोग हिंदी में थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी 5 जो है माइनस है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, +5 करना है। अगर यहाँ पे -5 होते +5 होते तो हम लोग माइनस करते, क्योंकि हमें यहाँ से x को अकेला बनाना है। तो x के बगल में पहले प्लस माइनस को हटाइए, ये आपका फर्स्ट काम है, ठीक। उसको हटाने के लिए आपको जो वैल्यू यहाँ पे है उसका अपोजिट वाला वैल्यू लीजिए। अभी इस तरफ जो वैल्यू बिठाएंगे, यहाँ अगर +5 बिठा रहे हैं एक्स्ट्रा, तो आपको उस तरफ भी +5 बिठाना है। ऐसा नहीं है कि इस तरफ हमने +5 लिया और उस तरफ -5, फिर आप रिजल्ट आपको मिलेगा और वो रॉन्ग होगा, और वो सॉल्यूशन जो मिलेगा उसमें बिठाने से आपको आंसर नहीं आएगा, ये ख्याल रखिए। तो यहाँ से आपको नए सिस्टम में क्या मिलता है, x/3 = 12 मिल रहा है, ठीक है। क्यों सर ये 6 हो गया और यहाँ पे 12 बन गया। अब आपका टारगेट देखिए x/3 है, इसका मतलब ये डिवाइड में है, तो हम लोग दोनों तरफ अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 इंटू करते हैं, चलिए नेक्स्ट समय देखते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 और यहाँ पे आपको 3 से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब वो नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, याद रखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए नॉन जीरो, मतलब जीरो से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और डिवाइड नहीं कर सकते, ये रूल कहता है, ठीक। तो यहाँ पे 3 कट गया, अब 3 कट गया तो आपको क्या मिल रहा है, आप देख सकते हैं x = आपको 12 3 36, मतलब x आपको जो मिला वो 36 मिला। इसका मतलब अगर हम x में यहाँ पे 36 बिठाएंगे तो हमें उस तरफ 7 जो वैल्यू है उसका सेम आना ही होगा। कैसे, चलिए चेक करके देखते हैं। LHS x/3 - 5, तो x is 36/3 - 5 and 12, so 12 - 5 giving 7, देख सकते हैं। तो ये जो पहला और दूसरा रूल हमने अप्लाई किया, ठीक। अब क्या है कि ये तो ठीक है सर हम लोग अप्लाई कर दिए, बचपन में देखें, 6 में भी शायद आप देखे होंगे इस तरह। अब हाई क्लासेस में आप जाते रहेंगे, आप ये रूल अप्लाई करते रहेंगे, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो उसके लिए हमारे पास ट्रांसपोजिशन मेथड है, ठीक। मतलब ट्रांसपोजिशन और कुछ नहीं है, ये चीज़ को एक छोटा सा रूप में डायरेक्ट बता दिया। क्या कहा कि इस तरफ से आप किसी को उस तरफ ले जाएंगे, देखिए ले जा रहे हैं एक्चुअली ले जाना मतलब यही चीज़ जो हम लोग करने वाले हैं। ये 5 को अगर आप देखिए -5 को आप लेके जाएंगे तो इस तरफ क्या होगा, +5 हो जाएगा, और इधर चलाएंगे, वही जो कंसेप्ट हम लोग जो सीख के आए ओरिजिनल, उसका ही छोटा सा वर्जन है ये, मतलब अपडेटेड एंड शॉर्ट फॉर्म। चलिए इसको अभी देखते हैं। सिंपल रूल है, रूल यह है कि आप इक्वेशन किसी भी साइड, इक्वेशन के इस तरफ हो या इस तरफ हो, किसी टर्म को उठा के अगर आप दूसरे साइड लाते हैं तो वहाँ जो टर्म का साइन है वो बदल जाएगा। कहने का मतलब इसी को ले लेते हैं हम, x/3 - 5 = 7। यहाँ पे सबसे पहले आपका रूल क्या है कि माइनस को हटाना है, तो आप क्या कीजिए, -5 को उस तरफ लेके जाइए, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। आप किसी को भी इस तरफ से उस तरफ लेके आ सकते हैं, पर हमारा टारगेट क्या होगा कि जो वेरिएबल होता है वो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, और बाकी सब जो कांस्टेंट वगैरह है उनके साथ लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, प्लस में हो या माइनस में, सबको उस तरफ भेज देते हैं, फिर हम लोग का x का वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ पे आपको -5 दिख रहा है,
तो ये -5 को आप उधर लेके जाइए। जब -5 उधर लेके जाता है तो ट्रांसपोजिशन मेथड कहता है कि माइनस प्लस बन जाएगा। एक्चुअली ये और कुछ नहीं है, जो अभी रूल आपने अप्लाई किया था उसी का शॉर्ट वर्जन है। आपको उतना दिखा के नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट आप कह रहे हैं कि -5 चला जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, x/3 लिखेंगे और इस तरफ 7 + 5 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद आप ऐड कर दीजिए, कोई बात नहीं, ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद आपको 12 मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए x डिवाइड बाई 3 है, तो यहाँ पे डिवाइड में है, तो डिवाइड जो चीज उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3 इधर उठ के 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप में x = 12 × 3 which gives you x = 36। बहुत ही सिंपल है और टाइम सेविंग है। तो अब बोलेंगे सर आपने जो पहले वाला किया था उनका क्या, उनके साथ कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस थे और यहाँ पे 3 थे, ठीक। इनका भी रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x को रख देंगे, +5 है उस तरफ भेज देंगे तो हमें मिलेगा 7 - 5, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएंगे। रिजल्ट आपको मिल रहा है 3x = 2। अब यहाँ पे 3x का मतलब होता है 3 × x, जो आप देख के आ चुके हैं, ठीक है। +6 7 में शायद या 6 में भी देखे होंगे इस तरह का 3x का मतलब क्या होता है 3 × x, ओके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे इंटू में है, इंटू वाले इस तरफ जब जाएगा इक्वल का तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये नीचे चले जाएंगे। नीचे मतलब यहाँ पे, तो यहाँ कौन है, यहाँ पे 1 है। अब कोई इंटीजर अगर लेते हैं उसके नीचे 1 होता है, ठीक। यहाँ 1 है तो 3 × 1 रिजल्ट क्या देगा, 3 देगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है कि 1 है या नहीं, सब समझता है, ठीक है, आप भी समझेंगे। तो यहाँ पे x = 28 लिख सकते हैं 2/3। अब सवाल ऐसा हो सकता है कि सर मान लीजिए ऐसा कोई स्टेप आता है कि 3x = 2/5 ऐसा है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आ रहे आपको ऐसे मिलता है, तो करना क्या है, कुछ नहीं, जस्ट 3 को नीचे भेज देंगे हम लोग। जब 3 नीचे, क्यों नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटू में है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो जब उस तरफ जा रहे तो डिवाइड में, तो इनके साथ में इंटू होगा ना, ये तो न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर होगा, तो ये चीज जो है वो डिनोमिनेटर के साथ इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 × 5 दैट इज 15, तो हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, 2/15। सवाल ये भी हो सकता है सर अगर यहाँ पे 7 हो गया क्या करेंगे, 3/7 2/5, अगर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे, टेंशन की बात नहीं है, इंटू में है ये डिवाइड में चला जाएगा, मतलब यहाँ पे इंटू हो जाएंगे डिनोमिनेटर के साथ, और यहाँ पे डिवाइड में है इस तरफ जाएगा तो इंटू में हो जाएगा। तो आपका स्टेप क्या होगा, x = 2/5, 7 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया, ठीक है, और इनको इंटू करते हैं दैट इज 14/15, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये ट्रांसपोजिशन रूल है। सर यहाँ पे और एक चीज़ दिख रहा है, वो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और कुछ नहीं, यहाँ पे आप देखें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। इसी का जब थोड़ा सा एक्सटेंडेड, मतलब उसमें थोड़ा और वेरिएबल और एक्सप्रेशन को थोड़ा और बड़ा करके जब लेंगे तब वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा स्पेशली नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, एक प्रॉब्लम को लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से करना है, ठीक। तो यहाँ पे आप मान लीजिए 2x + 5/7 का मान लीजिए यहाँ पे हम 3x - 8 = 2/7, इस तरह का प्रॉब्लम। तो इस तरह का प्रॉब्लम में क्या करना है आपको, सबसे पहले या यहाँ पर ये एक्सप्रेशन यहाँ हो सकता था, तो नीचे भी हो सकते थे, बात वही है। तो आपको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इधर वाली चीज इधर ही रहने दीजिए, ये वाला चीज जब इधर जाएगा तो इंटू में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ इंटू में जाएगा, तो ये जब इंटू में जाएगा ये सबके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, तो आपको ऐसे ब्रैकेट यहाँ से लेना है और इस तरफ 2 लेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे 3x - आप बोलेंगे सर क्या यहाँ पे इंटू सिंबल लगाना है, वो आपका चॉइस है, क्योंकि ब्रैकेट के बाद अगर आप कुछ नहीं लगाते हैं तो वो इंटू समझा जाता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सर, इसके बाद
इसके बाद हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में किस तरह से मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पहले सिखाया गया है। अब आप इंटू करना अच्छे से जानते होंगे। 7 2 14x प्लस 35 6x माइनस 16। अब अगर आप ठीक से देखते हैं, आपको तो x का वैल्यू चाहिए था। पहले हम जो प्रॉब्लम लिए थे उसमें एक तरफ x था। अब सर यहाँ पे तो दो तरफ x है, क्या करेंगे? टेंशन की बात नहीं, क्या करना है, जो भी x है वो एक तरफ लेके आइए। किस तरफ लाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड। ऐसा कोई रूल है क्या सर? ऐसा कोई रूल तो नहीं है कि आप लेफ्ट हैंड साइड में ही वेरिएबल रखिए, राइट हैंड साइड में नहीं रख सकते, पर क्या है कि स्टैंडर्ड है इसमें, एक देखने में सुंदरता होता है, ठीक है, उसको हम लोग बरकरार रखेंगे यहाँ पे। तो 14x है, 6x को इस तरफ लाएंगे। क्या 6x में यहाँ कोई सिंबल है? नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस है। तो 6x को आप इधर लेके आएंगे तो माइनस 6x होगा, तो हमें मिलेगा 14x माइनस 6x। इस तरफ आपको माइनस 16 मिला हुआ है पहले से, माइनस 16 है। देखिए ये इक्वेशन के उस तरफ ही है, तो यहाँ से फटाक से सिंबल मत चेंज करिए, क्योंकि वो उस तरफ इस तरफ नहीं गया है, वो इधर पे ही है, तो इसका सिंबल माइनस 16 रह गया। उसके बाद देखिए आपने 35 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 35 को आप इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पे क्या सिंबल है? प्लस 35 है, प्लस 35 इधर आ जाएगा तो माइनस 35 हो जाएगा, ठीक। तो हमें यहाँ पे जाना है माइनस। उसके बाद क्या, लाइक टर्म है दोनों, लाइक टर्म है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 14 से 6 चला जाएगा तो आपको मिलेगा 8x, तो आपको मिलता है 8x। और यहाँ पे क्या है कि दोनों नेगेटिव में है तो ऐड हो जाएंगे, तो फिर ऐड किया तो आपको यहाँ पे कितने मिलेंगे? 51 ना, तो यहाँ पे आपका 1 हो गया और 3 4 5 51 माइनस रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे सर? x के साथ इनटू में है, ये डिवाइड में चला जाएगा, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 51/8। ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आज के लिए क्लास इतना ही रहने दीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम को लेके आएंगे और ये सब कंसेप्ट को तो यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग ट्रांसपोजिशन और मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।